वो डाटा तो मेरे को देना चाहिए ना उनको, बिकॉज दे हैव एक्सेस टू ऑल द डाटा। सो यस वो इश्यूज हैं। सो वो स्पोर्ट ज्यादा जरूरी है देन यूजर्स। यूजर्स गेम अच्छी है तो अपने आप आएंगे। जैसे पोकेमॉन गो देख लो, यस अपना पोकेमॉन कंपनी इज नॉट इन इंडिया, बट फिर भी बहुत लोग पोकेमॉन गो खेल रहे हैं। उससे पहले एमएलबी भी जब थी अपनी मोबाइल लेजेंड बैंग बैंग, जब बिफोर इट गॉट बैंड, मतलब वो यस पब्लिशर था ही नहीं, बट बहुत लोग खेल रहे। तो यूजर एक्विजिशन की मेरे को इतनी चिंता नहीं है। मेरे को पूरे इकोसिस्टम की ज्यादा प्रॉब्लम है कि इकोसिस्टम में जो पब्लिशर का सपोर्ट होता है वो होना चाहिए। गॉट इट सर। सो सर, जैसा कि आपने इकोसिस्टम की बात करी, सो कैन यू प्लीज हेल्प अस कि व्हाट आर द मेजर इश्यूज इन इंडियन ई स्पोर्ट्स इकोसिस्टम सो वी कैन थिंक अबाउट इट। यार एज सच मेरा तो बड़ा क्लियर है यार, इंडियन ई स्पोर्ट्स इकोसिस्टम है ही नहीं। ठीक है, पूरा मिसिंग है। मतलब हम कहते हैं ई स्पोर्ट्स इकोसिस्टम है, ये है ई स्पोर्ट इकोसिस्टम को सपोर्ट करना चाहिए, बट मुझे बताना ई स्पोर्ट्स इकोसिस्टम है का इंडिया में? सब अपना अपना करें, विच आई एम ओके, आई एम परफेक्टली ओके विद दैट। बट फिर हमें बोलना नहीं कि चाहिए कि हम इकोसिस्टम को ग्रो कर रहे हैं। कोई इकोसिस्टम को ग्रो नहीं कर रहा है, सब अपना काम कर रहे हैं, विच आई एम ओके विद, बट इकोसिस्टम है ही नहीं इंडिया में। अब तुम देखो, जैसे अभी कोई भी टूर्नामेंट चल रहा है, जब तक वो ऑफिशियल टूर्नामेंट चल रहा है वो किसी टीओ को करने देते हैं। इकोसिस्टम में कास्टर्स आर आल्सो इंपॉर्टेंट पार्ट, बट वो कास्टर्स जो उस टूर्नामेंट में नहीं पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो 6 महीने खाली बैठे हो रहेंगे यार। जैसे राइट के केस में हुआ है। राइट जब अपना ये वीसीएल ऐसे कर रहा था 5 महीने, 5 महीने उन्होंने किसी टूर्नामेंट ऑपरेटर को करने नहीं दिया। इकोसिस्टम में कास्टर्स जितने वैलोरेंट के कास्टर्स हैं उन सबको गेम स्विच करनी पड़ी और CS2 में चले गए, जो भी हुआ है। तो वो प्रॉब्लम है। ओके सर, अंडरस्टैंड। एंड सर, व्हाट अबाउट दिस गवर्नमेंट, कि गवर्नमेंट का मतलब एज अ इंडस्ट्री एक्सपर्ट आपको ज्यादा इस सब के बारे में पता है कि गवर्नमेंट की क्या पॉलिसीज हैं ई स्पोर्ट्स के लिए, एंड गवर्नमेंट कैसे ई स्पोर्ट्स नॉट ओनली द ब्रांड्स, प्लेयर्स को और ब्रांड्स दोनों को कैसे हेल्प आउट कर रहा है या फिर कर सकता है इन फ्यूचर। देखो, गवर्नमेंट ब्रांड्स को तो कोई मतलब वो कुछ नहीं कर सकता डायरेक्टली, दे कांट हेल्प मेरे हिसाब से। आई थिंक कोई अगर गेम बैन होती है, आई अंडरस्टैंड द रीजंस, वो रीजंस गवर्नमेंट शुड कम आउट एंड स्पेल आउट क्लियरली कि बस इस रीजन से गेम बैन हुई है। और मतलब ये आ पाएगी नहीं आ पाएगी वो तो पब्लिशर बताएगा, बट वो लोग भी चुप रहते हैं। जैसे किसी ने बोला फ्री फायर की बात करो, अब मुझे बताओ गरीना ने आज तक बताया नहीं। एक बार अनाउंस किया कि गेम वापस आ रही है, उसके अगले दिन अनाउंस कर दिया कि गेम नहीं आ रही, बट कब तक आएगी वो सब जानना चाहते हैं। और स्पेशली फ्री फायर खेलने वाले जानना चाहते हैं, और हम टूर्नामेंट ऑपरेटर्स और जो ई स्पोर्ट्स एथलीट्स हैं वो भी जानना चाहते हैं, बट कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आती है। गवर्नमेंट से एक सपोर्ट चाहिए जो अभी तक नहीं मिली है, कि गवर्नमेंट शुड रिकॉग्नाइज ई स्पोर्ट्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स। वो कुछ उन्होंने एज अ मल्टी स्पोर्ट इवेंट उसको रिकॉग्नाइज किया है, बट उसका मतलब क्या मेरे को अभी तक समझ नहीं आया। सो वो थोड़ी क्लैरिटी अगर गवर्नमेंट देगी, एंड जैसे बाकी गवर्नमेंट्स आप देखो, कोरिया की, यूके की, दे हैव, और यूएस की, दे हैव डिफाइंड कि बस ई स्पोर्ट्स इज अ ऑफिशियल स्पोर्ट्स टाइटल। दैट इज द काइंड ऑफ वैलिडेशन हेल्प वी रिक्वायर फ्रॉम गवर्नमेंट, बिकॉज अगर गवर्नमेंट बोलेगी तो हम लोगों को, पेरेंट्स को समझाना आसान होगा कि आपके बच्चे कुछ ठीक काम कर रहे हैं। यस सर, गॉट इट। सो सर, if we talk about this e-sports ना, so e-sports थोड़ा सा कुछ मेरे पास में काफी बार कंसर्न आए हैं कि सर e-sports है क्या एग्जैक्टली में, सिर्फ प्लेइंग अ गेम, सिर्फ गेम को खेलना इज e-sports या फिर कुछ और भी उसके अलावा है? तो आप एक बार इस e-sports को थोड़ा अच्छे वे में डिफाइन कर सकते हैं सो प्लीज। हाँ, सो बेसिकली गेम को खेलना इज नॉट ई स्पोर्ट्स एट ऑल। गेम को कॉम्पिटिटिव मेथड में खेलना, कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप में खेलना, प्लस उसका ब्रॉडकास्ट हो, उसे ही स्पोर्ट्स बोलते हैं। मतलब जैसे हम क्रिकेट, क्रिकेट इज अ गेम, बट प्रोफेशनल क्रिकेट तभी खेलते हैं जब कोई टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज होता है और उसका ब्रॉडकास्ट होता है। सो वैसे ही ई स्पोर्ट्स भी, जब तक कोई मल्टीप्लेयर कॉम्पिटिटिव गेम नहीं हो, मतलब तुम जब तक किसी और टीम के साथ नहीं खेल रहे हो तब तक वो ई स्पोर्ट्स नहीं है। दैट इज वन। सेकेंडली, उस गेम में रैंडम फैक्टर नहीं होना चाहिए। और तीसरा, उसमें दैट शुड बी ब्रॉडकास्ट होना चाहिए। सो दीज आर द थ्री फैक्टर्स व्हिच डिफाइन ई स्पोर्ट्स। Okay, sir. Thank you. And sir, now we have 20 or 30 plus people, and most of the people are interested into making their career into esports only. So, sir, what would you like to recommend them? How they can make their career in esports, and what are the major opportunities for them? सो यार मैं एक चीज बताऊंगा ई स्पोर्ट्स के लिए,
जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है ना, उसकी कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। तुम किताबों में बहुत कुछ पढ़ते हो, बट उसको जाके कहीं इंप्लीमेंट करना बहुत अलग चीज है। सो मैं ये सबको एडवाइस दूंगा, बॉस, जहां पर भी इंटर्नशिप मिलती है, टेक दैट इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी। तुमने पढ़ाई की है, विच इज वेरी गुड, तुम्हारा कोर्स है, तुम सिखा रहे हो, बहुत अच्छा है, बट जब तक उसको रियल लाइफ में प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट होते नहीं देखोगे, तुम्हें स्पोर्ट्स का मतलब वो 10% ही पता है। वो किताबी पढ़ाई जैसे बाकी भी एजुकेशन सिस्टम देख लो, मैथ्स और फिजिक्स तो हमने सबने पढ़ा हुआ है, बट उसकी जब तक हमने लाइफ में यूटिलिटी आके उसको यूज नहीं किया, उस पढ़ाई का कोई फायदा नहीं है। सेम इज इन टर्म्स ऑफ ई स्पोर्ट्स। पढ़ाई की है, बहुत अच्छी बात है, कोर्सेज किए, बहुत अच्छी बात है, बट तुम्हें शुरू से ही इंटर्नशिप अटेम्प्ट करनी चाहिए कि बॉस मेरे को प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस चाहिए, क्योंकि जो प्रैक्टिकल लाइफ में होता है ना, वो किताबों में नहीं लिखा होता है। Yes. So, is it a good option as compared to this, what we can say, an engineer or a doctor or any other profession? If we compare esports player or esports industry jobs, so is it a देखो, good career option? एज ए ई स्पोर्ट्स प्लेयर तो प्रॉब्लम ये है, ई स्पोर्ट्स प्लेयर की तुम्हारी लाइफ शेल्फ लाइफ बहुत कम है। मतलब जनरली 25-26 की उम्र में यू हैव टू रिटायर फ्रॉम एज ए ई स्पोर्ट्स प्लेयर। बट उसका एडवांटेज है, एक बार ई स्पोर्ट्स प्लेयर अच्छे बन गए, यू कैन बिकम अ कोच, यू कैन बिकम मैनेजर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, फॉर ई स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन। एज अ प्लेयर तुम्हारी शेल्फ लाइफ बहुत कम है। इसलिए कोई भी मेरे पास आता है और कहता है मेरे को ई स्पोर्ट्स करना है, मैं कहता हूँ भाई पहले अपनी एजुकेशन खत्म कर ले, क्योंकि एजुकेशन खत्म करने से तुम्हारा बैकअप प्लान बन जाता है कि अगर कल को तुम्हारा ई स्पोर्ट्स कैरियर नहीं चला तो क्या करोगे। तो मैं सबको बोलता हूँ कि इसको एज अ डॉक्टर, एज अ इंजीनियर से मत कंपेयर करो। इट्स अ पैशन विच इज गुड पैशन, बट एज अ कैरियर तुम्हारा शेल्फ लाइफ उतनी नहीं है। एज ए स्पोर्ट्स प्लेयर, एज अ इन ई स्पोर्ट्स तुम्हारी शेल्फ लाइफ है। जैसे मेरे जो को फाउंडर है, फॉर लास्ट 16 years ही इज बीन पार्ट ऑफ ई स्पोर्ट्स। ही स्टार्टेड हिज कैरियर एज अ प्रोफेशनल प्लेयर, then moved to as a shoutcaster, then moved into broadcast, and right now he's co-founder of Penta Esports. His name is Kiran. So Kiran has last 16 साल से वो घुसा हुआ है, बट उसने इंजीनियरिंग भी की है, प्लस उसने इन्फोसिस में 3 साल काम भी किया है, बट उसने इन्फोसिस छोड़ के वापस ई स्पोर्ट्स में आ गया है। Nice, nice, nice. So majorly it's all about dedication and hard work कि सिर्फ आपको not a player कि आपको ई स्पोर्ट्स इंडस्ट्री में रहना है तो आप अलग अलग तरीके से आप कंट्रीब्यूट कर बिल्कुल सकते हो, अलग अलग बिल्कुल तरीके से आप ई स्पोर्ट्स में बिल्कुल। रह सकते हो, मतलब राइट? तुम कास्टर बन सकते हो, तुम एनालिस्ट बन सकते हो, तुम अपना ब्रॉडकास्ट में जा सकते हो, तुम ग्राफिक्स में कर सकते हो। सो कैरियर बनाना, मतलब ई स्पोर्ट्स एज अ कैरियर इज डिफरेंट, बट उसके लिए जो बैकग्राउंड नॉलेज चाहिए वो चाहिए तुम्हें। अगर तुम ग्राफिक्स में जा रहे हो तो तुम्हें पता होना चाहिए कि कौन से टूल्स यूज करने हैं, कैसे यूज करने हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं तुम्हें डिग्री चाहिए, बट तुम्हें टूल्स पता होने चाहिए। Perfect. So, sir, मतलब how Penta esports can help the esports people for their bright future? सो बेसिकली आप देखोगे तो वी ओनली फोकस ऑन, मेजॉरिटी ऑफ द टाइम वी फोकस ऑन ग्रासरूट स्पोर्ट्स। मतलब वी हैव अ लीग विच इज फॉर पीपल हु आर नॉट प्रोफेशनल प्लेयर्स। सो मतलब आप देखोगे वी कॉल आवरसेल्फ एज द रणजी कप फॉर क्रिकेट, वी आर इक्विवेलेंट टू दैट। सो वी वांट टू प्रमोट you guys to become stars, so we give you the platform to participate. मैं बड़ा फक्र करता हूं इस बात में कहने के लिए कि हमारे एमेचर लीग के जो वेलोरेंट की टीम थी, जो विनर थे हमारे वेलोरेंट के एमेचर टूर्नामेंट के, वो आज डेविनेंट की टीम थी। सिमिलरली जो हमारी पोकेमॉन के विनर्स थे, एक टीम उस टूर्नामेंट के बाद एक्वायर की थी ओरंगुटान ने, और एक टीम को एक्वायर किया था इसने रेवेनेंट ने। सो वी विल गिव यू द प्लेटफॉर्म, बाकी उसके बाद उस प्लेटफॉर्म पे चमकना तुम्हारा काम है। क्योंकि बाकी जो टूर्नामेंट देखेगा जो सबके लिए होते हैं, उसमें प्रॉब्लम क्या होती है, ब्रॉडकास्ट होता है, बट ब्रॉडकास्ट 4 दिन का है। अगर उसमें प्रोफेशनल प्लेयर्स भी खेल रहे हैं तो 4 दिन के बाद वही 4 सेम लोग तुम्हें स्टेज पे दिखेंगे। हमारे यहाँ पर एटलीस्ट तुम्हें व्हेन यू आर प्लेइंग, प्रोफेशनल प्लेयर्स नहीं अलाउड होते हैं हमारे एमेचर टूर्नामेंट्स में। सो दैट इज वन। सेकेंडली, वी डू अ स्पेशल लीग फॉर कॉलेजेस, वेयर इफ यू आर अ कॉलेज स्टूडेंट, वी गिव यू प्लेटफॉर्म टू कम एंड पार्टिसिपेट इन आवर टूर्नामेंट। सो तुम्हें मतलब अपना हुनर दिखाने का मौका दे रहे हैं, बाकी तुम्हारे पे है। Got it, sir. So basically, ऐसा नहीं है कि
आप छोटे प्लेटफॉर्म से आप बड़े प्लेटफॉर्म पे नहीं जा सकते. अगर आपके पास में बिल्कुल. स्किल्स है, if you want to do this, then तो definitely you can do it. तो मैं एक और बताऊं, हमारा एक प्रोफेशनल लीग भी होता है, और प्रोफेशनल लीग में विनर फ्रॉम एमेचर लीग एंड कॉलेज लीग आर इनवाइटेड. इट्स ओनली इनवाइट ओनली, बट उसमें वी इनवाइट आवर विनर्स ऑफ आवर कॉलेज लीग एंड amateur league and all the pro teams. So that is the way we want to showcase the talent. Understand, sir. Understand. So, sir, ठीक है. I understand, and most of the people also understand. I think so, guys. अभी let's do, sir. Like, my major questions are enough. We are done from our this question and answer session. If you ठीक है. want, sir, कि अगर आपको कुछ और insights देने हैं about esports industry, how these people can grow, and even हम लोग भी as a esports का जो कि ecosystem बनाने की कोशिश कर रहे हैं as a education company, we just want to promote esports in India. So majorly हमारे साथ में भी काफी बार problems होता है. काफी सारे बच्चे बोलते हैं कि सर हमारे को फैमिली रेडी नहीं हो रहा है, सर पेरेंट्स को कैसे मैं कन्विंस करूं, जो कि बहुत जेनरिक है अभी इंडिया में, क्योंकि इतना बहुत जेन्युइन है यार, क्योंकि तू मतलब बाकी पेरेंट्स की बात कर रहा है, मैं अपने घर की बताता हूँ. सो आई हैव अ 10-year-old सन, ही वांट्स टू बिकम अ ई-स्पोर्ट प्लेयर. मैं तो कह रहा हूँ खेल लो, बट मदर कहती है नहीं बेटा पढ़ाई करो, गो इनटू ट्रेडिशनल पार्ट. सो आई अंडरस्टैंड दैट होल प्रॉब्लम. आई थिंक उसको कन्विंस करने का एक ही तरीका है, दैट तुम्हें पेरेंट्स के साथ बैठ के उनको ई स्पोर्ट समझाओ, उनको ई स्पोर्ट्स दिखाओ कि बस इट इज नॉट ओनली, इट्स लाइक एनी अदर स्पोर्ट यार. इट्स नॉट लाइक प्लेइंग अ गेम ओनली, इट्स कंपीटिंग इन अ गेम. बट एक चीज याद रखो यार, जब तक एक हमारे मतलब सब प्लेयर्स की भी मेरे को थोड़ी सी शिकायत है, वो खेलने बैठते हैं तो 18-18 घंटे खेलते हैं. मतलब कोई भी पेरेंट होएगा वो कहेगा भाई इतना मत खेल, बाकी बाहर भी जाओ. सो आई थिंक वो बैलेंस, राइट बैलेंस मेंटेन करना बहुत जरूरी है यार, जो हमारे प्लेयर्स नहीं करते हैं. मेरे को पता है, बिकॉज आई हैव बीन अ प्लेयर सिंस 1986, गेमर सिंस 1986, नेवर पार्टिसिपेटेड. तो वो रात भर बैठ के मेरी भी आदत थी, बट मतलब वो जब माँ बाप की गाली पड़ी तो सुधर गए हैं. आजकल मैं सिर्फ रात को 2 बजे तक खेलता हूँ, बट ठीक है. थैंक यू सर. सो सर, एंड ये डिवाइस का जो प्रॉब्लम है कि काफी सारे बच्चे ये भी बोलते हैं कि सर हमारे पास में डिवाइस नहीं है. यार तो दिस आई डोंट एग्री. मेरे पास बहुत लोग आते हैं कि सर हमें आईफोन दे दीजिए, हमारे पास पोटेंशियल है. बस वो डिवाइस इज ओनली वन पार्ट. तुम अच्छा खेलोगे, तुम्हें ऑलरेडी स्पॉन्सरशिप मिलेगी, बट सेइंग कि हमारे पास आईफोन नहीं है इसलिए हम नहीं खेल पा रहे, आई डोंट एग्री. बिकॉज तू अगर आज से 4 साल पहले देखे, बस कोई लोग कोई आईफोन से नहीं खेलता था, सब अपने एंड्रॉइड फोन से खेलते थे. सो यस आई थिंक वो थोड़ा सा हमारे प्लेयर्स ने एक्सक्यूज बना लिया उसको कि हमारे पास अच्छी डिवाइस नहीं है. मुझे याद है जब CS 1.6 खेलते थे, कौन से हमारे पास ये सीरीज 4 के कार्ड्स होते हैं या सीरीज 3 के एनवीडिया कार्ड्स होते थे यार, नॉर्मल एम्बेडेड ग्राफिक कार्ड पे खेलते थे यार हम लोग. सो वो मतलब उसको एक्सक्यूज बनाना कि हम अपना गेम प्ले नहीं दिखा पा रहे क्योंकि हमारे पास एंड्रॉइड नहीं है, आई स्लाइटली डिसएग्री विद दैट. मतलब यस ठीक है, तुम्हें थोड़ा सर. सा एडवांटेज मिलता है अगर तुम आईफोन पे खेल रहे हो, बट तुम ये कहना कि हमारे पास आईफोन नहीं है इसलिए हम खेल नहीं पा रहे, आई डोंट एग्री. सो मेजरली जो आपका गेम का स्टाइल है और जो आपका आपका गेम का जो स्किल्स है, दैट इज मेन थिंग, एंड बिल्कुल. डिवाइस सेकेंडरी है. डिवाइस मतलब जरूरी है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम 4,000 के फोन पे बीजीएमआई खेलो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, बट 15,000 के फोन पे भी अच्छा अपनी स्किल्स दिखा सकते हो इंस्टेड ऑफ वेटिंग फॉर आईफोन टू कम. बस आईफोन मैं 6 साल बाद अपग्रेड करता हूँ अपना फोन. ठीक है, मेरा लास्ट आईफोन 6 था, मैंने अब आईफोन 13 लिया है लास्ट ईयर. सो अगर मैं अपना काम चला लेता हूँ, आई नो तुम लोग कहोगे कि हमारा एफपीएस नहीं आता, हमारा डिवाइस गर्म होती है, समझ आता है, बट उससे इतना आईफोन से इतना फर्क नहीं पड़ेगा. Yes, sir. Yes, sir. So, sir, second second thing, let's move on to this question and answer, guys. आप लोगों को जो भी क्वेश्चंस पूछने हैं, प्लीज हाँ, कमेंट बॉक्स में आप डाल सकते हो. We will take one by one. Okay. डन, एग्रीड. Yes. So our first, sir, a beginner. I want to restart my esports journey, but I'm not able to play as I do earlier. I need some tips how to start and step by step process for grow in already grown community. लिसन, वो डिपेंड करता है व्हाट गेम यू आर प्लेइंग. लाइक इफ यू आर प्लेइंग बीजीएमआई,
today there are enough opportunities for you to participate in tournaments which are open tournaments. I know BMPS is not an open tournament, but the grind, etc., was a complete open tournament which was for anybody to play. Once Free Fire comes back, scene's gonna be the same. I think the scene is same for even on the PC for Valorant. So I think it's more to do on your dedication, your time commitment. I know you will always say, boss, for cricket we are allowed to play practice 6 hours, but our parents don't allow us to practice for video games for this much. I think you need to make them understand that once you are playing, it's like any other sport and not just a video game. Got it. Sir, our second question is from Akash. Akash is telling it, I am playing well, but I have no opportunity to join esports team. So Akash, next time, which game Akash is playing? Anyways, will Akash, you can always follow Penta Esports channels, because we keep doing these tournaments very regularly, which is especially for people like you, where people like you participate and people like you are shown on the broadcast. So be part of that, because that is, as I've said earlier, uh, winners of our teams have gone and joined other teams. So that is the best stage we can provide. And sir, Mannat is telling us, sir, I really need one opportunity, लेकिन sir मिलती नहीं है. I really give my 100%. मदद एक काम करियो, मेरे को ईमेल या इंस्टाग्राम पे मैसेज करियो, आई टॉक टू यू लेटर, बिकॉज तेरा आई नीड टू अंडरस्टैंड कौन सी तू गेम खेल रहा था, कौन किस लेवल पे तू अटका, किस वजह से अटका, बिकॉज दिस इज वेरी पर्सनल थिंग. बट ऑल आई कैन से इज द बेस्ट वे टू बी पार्ट ऑफ अ T2 और T3 टीम इज कि बॉस अपनी रिकॉर्डिंग करो, उस टीम को भेजो या अपने इंस्टाग्राम पे डालो एंड गेट इट प्रमोटेड फॉर. तुम्हें अपनी स्किल्स दिखा दी है बॉस, सिर्फ अपनी स्किल्स दिखा दी है, बाकी बाकी टीम का काम है. I think Mannat, we are quite good to go. Sir, will there be any scene in India for Farlight? Oh, sorry, Fortnite. It's यार Farlight or Fortnite? फोर्टनाइट मेरे को बहुत अच्छी लगती है गेम, बट द प्रॉब्लम इज as Epic is not in India, number one. Number two, Fortnite on mobile isn't doing very good worldwide because, as you know, Epic had a fight with Apple and Google, so they have discontinued. As a PC game, yes, there is a lot of scope, but India में मेरे को उतना ज़्यादा scope नहीं दिखता, Fortnite का especially. Okay. Sir, same with me when our final for India today match, but it was late night match and I was not able. Sorry, this I'm not able to understand what he's trying to say. Uh, whose question is this? Uh, Abhinav Bhardwaj. Yeah. Same happened to me on our final for India today match, but a late night match, and I was on. Yeah, man. I understand. He's saying that the match for India today league was very late, but unfortunately, that's how most of the TOs are in India, yaar. Except, matlab, I can say that's not how us not win or TC works. I can say that for sure. We have set timings, and those timings are in evening at max, but not going till night. Okay. So, sir, next question is from Prince Music. Okay, Free Fire is coming back January last and big tournament coming. FFIC official tournament is Free Fire, so you know them Rocky and RDX is so news is live. Hmm. Okay, So I so know what he's saying, but yeah, there's no confirmation whether it will be January, February, March. What I know that Free Fire is gonna come back and then they're gonna do FFIC, as he said. That much I know, but exact month when it's coming back, trust me, even Garina doesn't know. so sir, next question is from Bhavesh. How much do the highest paid esports professionals earn? Yeah, if you are playing esports just to earn money, I would not recommend it. Matlab, money is byproduct of a good work. So if you're just generally wanna know, I think last I heard, I think seven lakhs was maximum a player was getting paid on a monthly basis. But then again, the life of a esports athlete is very short. It's still 25, 26. Yeah. Now, Hadik
Sir, I don't complain about device and all, but what about the state like Kashmir, where no tournament are held and where I'm not able to play, I'm not able to find tier 3 players for my team. I totally get it, Hardik. But the best part is for you, one good part is that since all most of these tournaments are online only, so finding players is not a bigger issue. Of course, I know what's happening at JNK, so I don't know. The complaint should be that internet is not stable or internet is low speed. I think that complaint I understand, but since most of these tournaments are online, you being in Kashmir shouldn't hamper it. Finding three more players to play with you, I think the best way to is to join Discord channel. You come to our Discord channel, and there's already a find a teammate section there. So you can just say looking for three more player, and we will help you find your three players and make a team. Yes, sir, understand. Sir, Abhinav is telling us, please open your cameras. It's a memorable moment that we meet three of different teams. Abhinav, we will do this after this discussion, okay? For a few seconds. And thank you. And we really appreciate Anurag sir to join this call. Hey, my pleasure. I want to answer question of Daksh also, where he says, how can I join a team and play CODM? So, yeah, Hmm. the whole thing with Call of Duty Mobile is it's a very good game to play. I totally agree with you. But if you look at the esports scene of CODM, that is almost vanished, especially after BGMI came back. When BGMI was banned and Free Fire was banned, the only game working on mobile was CODM and New State. But unfortunately, with these two title or one title coming back, and as other friend has just said that January Free Fire is coming back, I think the CODM ecosystem, the player base, the tournaments have disappeared. So the open tournaments, I think, happen inside the game for Call of Duty Mobile World Championship. That is the only way to enter. But there, again, the problem is that first phase is you have to earn so much points solo, and second phase is you have to register a team. Finding that team is a bigger issue than anything else. Yes, sir. Sir, please, without money, come in esports. PeakX please is asking. What's he saying? Asking without money. Come in esports career. I'm also not able to understand what he's trying Yeah. to do. Peak, if you can frame your question slightly elaborately, I think we'll be able to answer. Sir, please organize one tournament for underdog in Yes, BGMI. so under our amateur league, we only organize. I don't call them underdogs. I call them amateur players or semi-professional players. So we will be conducting one once this BMPS is over. That's when we'll get permission to host a tournament. So we will definitely be doing it. Keep an eye out for our handles. Yes, sir. Sir, how can I showcase my skills? I think Anurag sir already told you guys just make some reels, showcase the talent over social media platforms, and you can share this all these things over various platforms, right, sir? Yeah, exactly. And one more thing you can do is don't tag T1 teams, tag T2 and T3 teams because they are more open and looking for new people to join their rosters. Roshan is telling us BGMI already have a mass audience, so it's a bit difficult for that game. So, will you recommend any other game? So It's yeah, a if good you look question. at BGMI, the best part of BGMI that I think is there is that they do tournaments which are open for people. Like most of the other games, these tournaments, number one, the frequency is very low, and second, they don't hold those tournaments themselves. If you look at Riot, Riot is not holding any tournament which is open for any new player. If you free fire is not here, but so is the case of codem, etc. So if I say recommend a game, I think it will more depend what game you love to play, because if you don't like the game, my recommending a game will not help you. If you really ask me, I really enjoy playing and watching codem tournaments, but unfortunately codem scene is not there, and I don't know whether you like playing 5v5 games or not. So I think it more depends on what kind of game you like to play. You just grind in that, and I hope that you get picked up by international team. Why just India team? Why not you look at South Asia or international team picking you up? Understand, sir.
Sir, YouTube Dark Soul is telling us, sir, I am playing from PUBG and BGMI from last 5 years and competitive from last 4 years. Had a lot of experience and achievements, but did not get proper chance. I have good gameplay, game sense, and I am a IGL qualified officials, but not eliminated from hackers. Hmm. BGMS Season 2, 2023 Round 3, BGIS 2023 R1, Sky Esports Round 4. So, is there any problem with the people or hackers? I think hackers is a big issue in BGMI, at least, if not PUBG days, I don't remember. But I see a lot of issues with hackers, not just me. A lot of T1 players have been complaining about hackers, so I understand that. Do one thing, Dark Soul, just DM me on personal. I think I'll try to help you because I know a lot of T1 players wanna create their own teams and they're looking at people like you to join their team who are not big names but are good players. So just get in touch with me. Yes, YouTube Dark Soul, I will introduce you over email with Done. Anurag sir. Okay. And now we have first question from a girl gamer. Bhavya is asking, sir, I want to advise that most of the student in our school plays BGMI and have a good amount of teams, but our school always decline for an esports event in school. So I know where you are coming from, but I think one thing you should remember that right now even colleges are not allowing esports teams. So schools is a far away part, but I think it so you luckily for BGMI etc. You don't need schools permission to make a team and participate. Uh, right now, I think there's another issue with not issue, but one more concern I have. I don't know your age, Bhavya, but there's a rating for every game. I hope you are under the rating to play that game. I know my son is 10-year-old who plays games which are 14 plus, but I am aware and I'm okay with that. But lot of schools, especially educational institutes and parents won't be okay with that. So I think getting esports into schools is still far away because we are right now working with a lot of colleges getting esports inside the colleges first and then we'll look at games because but also the kind of games that happens in high schools etc in esports worldwide are very different games. They are definitely not the violent games like at least depicted as a violent games like BGMI. yes, sir. So, and now we have Divya Tomar. Hi, Anurag sir. I feel honored to be with you in this webinar. Thanks to VR1. Thank you, Divya. I wanted to ask a question on behalf of all the female esports players. That what Penta Esports is offering in the growth of female players. See, I am very clear here. A player is a player to me. It doesn't matter whether he's a male or a female. I am one guy who doesn't wanna discriminate against female or say, oh, this is league only for female because trust me, that will never make sense in Indian scenario because I think the only girls only league that I've seen worldwide is a league called Game Changer, which is done by Valorant. But that's the only one I've seen. But otherwise, for me, esports player is an esports player. There is no difference whether that is a guy or a girl for me. So there's nothing special we are doing. Yes, we are doing special what we can do for semi-professional or amateur players, but we are not doing based on whether you are a male or a female. Yeah, great, sir. Sir, Shubham is telling us, I love gaming, sir. I tell my parents, but they're not supporting. They want job. I am telling about esports, but they can't listening. What can I do? So my advice, as I said earlier, I think you need to sit with them and explain what esports is. Show them matches. I know they won't understand initially, so you should be. So it's a kind of a joint effort where you have to sit with parents, make them understand what esports is and what role you gonna play. Because I see a lot of negative news in social media in the past, at least that this guy did this because of this game, but actually look at the actual part, it was not related to gaming. That was the
general thing which happened because of any gaming, but all these kind of things set a bad precedent for parent. I totally get it. So I think what is more important is you show them, sit with them, explain them. Like right now, BMPS is going. I think when the finals happen, you should show them finals that this is the stage I want to be on. I think they should, might not happen on day one, but in 1 month, 2 months, they should get what do you want to do, and don't call esports as a gaming. Call esports as a sport. Yes, sir. That people understand. Hmm. Yeah, Okay. Yes, sir. Sir, then another guy, Trishar Arun is telling us ki how can make gameplay clips for tier one, tier team, or YouTube or Instagram. I think you need to record it directly from your device and just post it. Let me check if my colleague Robin is here. Uh, no, I think he left. But just send a message to us on our Instagram. I'll ask somebody from my office to help you guys. Done, sir. Thank you. Sir, now Jatin is telling us ki is there any other career or esports other than player? Yeah, Jatin, sir already told us. yeah. So there are careers like shoutcasters, if you're good at speaking and understand the game logic. Then there's broadcast, then there's tournament management, then there's graphics. So all the other careers which are there for any sports industry, all those careers are available for esports also. Yes, sir. We have a great question from Manoj sir. Hi, I am Manoj sir. My question is: will Valorant will survive for next 3 years in Nah, esports? What's your nah, opinion? nah, nah. The way Riot is working, it won't. Okay, the way they are working right now, so they are not Yeah. able to survive. I don't think so. Esports won't survive. Valorant will survive. But Yes. Valorant is a great game. I love it. So I don't know whether their esports will able to survive or not. The only way Valorant esports might survive in India if they release the mobile version very soon. Perfect, sir. And the quantity is also too high of mobile gamers as compared to desktop, right? Yeah, exactly. Because mobiles are with all the kids today. Hmm. So even the base who can play the game is much higher than when you have to play on a PC, because PC, yes, you need decent specs. You don't need specs like you need to play other games like GTA, etc. You need decent specs, but that again costs you a lakh at least. Yes, sir. And sir, now it's time to conclude the session. We already had a great discussion with everybody, and it's not like it is not possible to take this more longer. So, sir, as a feedback, मतलब what would you like to say as your final words कि ठीक है, if you want to make your career in esports तो इस लाइन में आप एक बार चले जाइए. बस बड़ा सिंपल है, अगर तुम ई स्पोर्ट्स प्लेयर हो तो कीप ग्राइंडिंग. I मैं मानता हूँ कि luck also plays a very big part as a esports player for you to get recognized by a team. I am not denying that. You have to be lucky to be part of esports, known as a known personality. आप देखोगे BGMI में कितने, I think 2000 टीम्स ने खेला है, बट हम उन्हीं 15-20 लोगों के नाम जानते हैं. ठीक है, so you have to be lucky. I agree, but तुम्हें अपनी तरफ से पूरी मेहनत करनी है. और तुम अगर ई स्पोर्ट्स के बाकी इंडस्ट्री में आ रहे हो जैसे कास्टर, प्रोडक्शन, ये सब, वहां पर द बेस्ट थिंग यू शुड डू इज अप्लाई टू ऑल द ई स्पोर्ट्स कंपनीज फॉर इंटर्नशिप. पैसे नहीं मिलते हैं, आई एग्री, बट तुम्हें जो एक्सपीरियंस मिलेगा वो तुम्हारे आगे के कैरियर के लिए बहुत अच्छा रहेगा. Okay, sir. Thank you, sir. It was really nice to meet you here, and माय you gave प्लेजर us यार. your great time, sir. Now, sir, you can left if you want, and we will do a feedback session where we will take a, reference for our upcoming webinars, what we have to improve, and all these things. So Saurabh, can I put Yes, my sir. Instagram here so that Yes, anybody sir. who has Sure. any No questions problem. You they can can put ask? Instagram, you can put your Discord server, anything that you want. No problem, sir. Okay. uh, And sir, Abhinav is telling us, sir, camera, please, sir. If you are मैं calling. प्लीज कर दे ऑन.
सर आपका भी करवाना है उन्हें? हाँ मेरा कर दे ना, मेरे वहां पर डिसेबल्ड आ रहा है स्विच। ओके सर, वन सेकेंड। हाँ सर कैन यू प्लीज ट्राई नाउ? हाँ आ गया, चल यस सर। ठीक है। गाइस, सो जिसको भी सेल्फी लेना है या फिर स्क्रीनशॉट लेना है, प्लीज टेक राइट नाउ। मेरा डन यार, गाइस? सो ये मेरा पर्सनल इंस्टाग्राम है, मेरा ऑफिशियल इंस्टाग्राम इज, ये ऑफिशियल है, कहीं भी रीच कर लो, विल रिप्लाई बैक। ठीक है, चलो, ठीक है सर, थैंक थैंक्स यू सर। सौरभ, थैंक थैंक्स यू, बाय, सौरभ, टेक केयर। बाय 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 बाय। Rahul, can you please turn off your camera? So guys, do you guys like this session? सबको पसंद आया या फिर नहीं आया? Guys, please जल्दी जल्दी, फटाफट फटाफट। Great. So, guys, अभी हम लोग ना, I think भावेश already told you. So, if you guys want to make your career, हम लोग हमारा एक 1 मंथ का ई स्पोर्ट सर्टिफिकेशन प्रोग्राम हम लोग रन करते हैं, जिसमें हम लोग आपका क्वालिटीज को इम्प्रूव करते हैं। काफी सारे बच्चे ऑलरेडी उस बैच में एडमिटेड है, जिन्होंने एडमिशंस ले लिए दिसंबर बैच में, उनका फर्स्ट इंट्रोडक्शन ऑलरेडी हो चुका है एंड क्लासेस भी उनकी शुरू होने वाली है। सो सिमिलरली हमारा सेकंड दिसंबर का सेकंड बैच भी हमारा अभी लाइनअप है। If you guys want to make your career, yeah, YouTube Dark Soul, please hold on, just give me some time, okay? We will talk. We will talk over a call. Done. तो गाइज, इफ यू वांट टू मेक योर करियर ना, तो हमारे टीम से आप बात कर लो। हमारा 1 मंथ का सर्टिफिकेशन कोर्स है। अभी हम लोग पूरे 2 महीने 3 महीने बैक टू बैक सारे इंडस्ट्री एक्सपर्ट जितने हो पाएगा, ई स्पोर्ट्स प्लेयर्स, टीयर 1 ई स्पोर्ट्स प्लेयर्स, ब्रांड ऑनर्स, ब्रांड एम्बेसडर्स, जितना हम लोग ला पाएंगे उतना हम लोग ले आएंगे। एंड जिसको भी कोर्स में एडमिशन लेना है, वो भावेश के साथ में डिस्कशन कर ले या फिर हमारी टीम से कोऑर्डिनेट कर ले, ठीक है? अगर कुछ स्टूडेंट्स चाहते हैं कि जो आज ही अपना एडमिशन कंफर्म कराए, हमारा फीस है 5000 रुपीज। अगर आज कोई भी स्टूडेंट अगर एडमिशन लेना चाहता है, तो उसको हम फ्लैट 1000 रुपीज का डिस्काउंट देंगे और उसका एडमिशन है वो 4000 रुपीज में हो जाएगा। तो यस गाइस, टेल मी। I want to, but did not have the number. Avinav, Bhavesh, please talk to Avinav Bhardwaj as soon as possible. Some session first question was is not answered yet. Yes.